All right, so welcome back to class. First, a brief recap of what we looked at in Monday's class. तो हमने Carol Heim का article देखा था जिसमें she helped us understand or define what is capitalism. As I said in that class as well, and I'll repeat here, it's very important for us to understand exactly what we mean when we use the term capitalism, because we're going to be using it for the entire course almost. And what we don't mean first and foremost is that just because a market exists doesn't mean capitalism exists. Just because somebody is interested in the self or self-interested or greedy or selfish or whatnot, it doesn't mean that capitalism exists. Just because somebody is buying and selling things, which is what would happen if you have a market, or utilizing certain things that are produced by capitalism, doesn't make them a capitalist either. What is the difference then between markets and capitalism? The difference is that markets have come into existence, historically speaking, over a much longer period of time. They came into existence a long time ago. Capitalism, however, has only come about, relatively speaking, recently. And industrial capitalism, just that we recognize today as being sort of what we call capitalism, has only come about after the Industrial Revolution, which of course is the late 18th century. Very, very late in the day. Just very recently, a couple of generations ago, in fact. So a lot of economists, when you study classes in, the economics department, etc., they may try to convince you that capitalism is something very natural and spontaneous and has always existed because people have always traded with each other or something. But number one, it's not even true that people have always traded with each other. And secondly, it's also not true that markets have always existed. Markets themselves have a long period of evolution. They begin with long distance markets, barter, etc., then trade utilizing precious metals, etc., and that continues to evolve into the markets that we know today. So what is the difference between markets and capitalism? Capitalism is a market economy or a market society. When we use the term market economy or market society, that is something different from just market. Market तो कहीं भी exist कर सकती है. Market feudalism के period के अंदर भी exist करती थी. Slave market भी एक market होती थी. वो capitalism तो नहीं था. वो कोई और चीज़ थी. So markets can exist with or without capitalism, but when the market determines the allocation of resources, that's when you get capitalism. That's very, very important. And the most important resource in that, of course, how can the market determine the allocation of resources? The most important resource we're talking about here is labor, the ability to do work. When that gets converted into a commodity, that's when the market can maneuver it around and ensure that its allocation in this or that branch of industry. So what is the difference between markets and capitalism? Capitalism exists when labor becomes a commodity, that is, labor becomes labor power. So when does capitalism begin? As I've already explained to you, its evolution is a long period. I looked at the history of closures, etc., enclosures, कि किस तरह से common lands को enclose किया गया, and that began all the way back in the 14th century and continued for 200 odd years. And then we looked at very briefly, the rise of industrial capitalism proper, which is the late 18th century, 1780s and so on. So that's when it really began. What are the two forms of antediluvian capital? Merchant capital and usurious capital have existed before capitalism, and they are not capitalism itself, but they are a form of antediluvian capital. What does antediluvian mean? Primitive, older forms of capital. Okay? What social classes were weakened or strengthened with capitalism? Naturally, the capitalist class was strengthened with capitalism. और capitalist class के साथ जो working class है, जो industrial working class है, that was also strengthened. What classes were weakened? That would be the landed class, the old aristocracy, and also the peasantry, which was the class associated with the older system. जो older system की classes हैं, feudal lord और peasantry, वो खत्म हो गई, और जो नए system की classes हैं, यानी कि bourgeoisie or proletariat या capitalist and worker, वो ऊपर आई. Okay, so that was a brief summary of Carol Heim's reading. Then we looked at Carol Polanyi, and I know कि बहुत ज़्यादा slides थी, and I went through them like a rocket, and by the end of it, Anjil was like having to go outside to get coffee, etc. And I felt so guilty afterwards. I went home and I said to my wife, I said, आज मैंने students के साथ बड़ी ज़्यादती की है. कहती क्यों? मैं कहा 100 स्लाइडें मैंने इतनी स्पीड में पढ़ाई हैं कि उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली है कि सर से आइंदा कोई कोर्स नहीं लेना. तो खैर, anyway, आज I'm going to take it easy, okay? Famous last words, but I'll try. So उसके बाद हमने कार्ल पोलानी को देखा और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब कॉल्ड द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन उसको देखने की कोशिश की. इट्स नॉट अ वेरी बिग बुक बट इट इज़ अ प्रीटी डेंस बुक और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको साइट पे करते हैं. काफ़ी इन्फ्लुएंशियल किताब है. मैंने आपको बताया
कि किस तरह से ये किताब जो है बेसिकली ऑस्ट्रियन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू के ख़िलाफ़ लिखी गई थी, और ऑस्ट्रियन स्कूल ही बजाते खुद यानी कि लुडविग वॉन मिसेस एंड Frederick von Hayek, that evolved into what we today know as the marginalist school, or what we call, classical, or what we call economics today. The marginalist school of economics came to dominate economics as a whole, not immediately, but over a long period of time. Sometime in the 70s and 80s it came to dominate over economics, very late in the day. उससे पहले कौन से स्कूल ज़्यादा कॉमन थे? क्लासिकल लिबरलिज्म का स्कूल ज़्यादा कॉमन था, पॉलिटिकल इकोनॉमी का कॉमन था, केन्स का बहुत कॉमन था. जी. Yes, Keynes was very common at a certain period, obviously after Keynes wrote, not before he wrote. So what was Polanyi trying to explain? वो पहले तो ये बात दिखाता है कि look, pre-capitalist societies और capitalist society में बड़ा फ़र्क है, और ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमिस्ट अक्सर इग्नोर कर जाते हैं. जब आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास, या पहले मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर होता था, तो जब क्लास शुरू होती है तो उसके अंदर आपको ये नहीं समझाया जाता कि भाई पहले ज़माने में कुछ और सिस्टम था, अब कोई और है. आपको कहा जाता है इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्केर्सिटी एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड दैट समहाउ ऑल द अदर ऑलवेज एग्जिस्टेड, एंड समहाउ मैजिकली your capitalism is almost invisibilized as a consequence of that. Like that relationship of trading and barter is capitalism, and that has always existed, and hence capitalism has always existed, and we're just trying to understand it. But that's not the reality at all. Okay? For example, pre-capitalist societies were not organized by the market, and they were not organized around gain. There are many diverse kind of pre-capitalist societies. कोई एक किस्म की नहीं है, बहुत मुख्तलिफ किस्म की societies हैं. कोई इनकाज हैं ऑफ साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, कोई एस्टेक्स हैं, तो कोई अफ्रीकन मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं, तो कम्बोडिया के अंदर अपने एक बड़ा एंशंट किंगडम चल रहा था, कहीं एक जगह कास्ट सिस्टम चल रहा था, तो कहीं और पे इक्ता का निज़ाम चल रहा है, कहीं कुछ निज़ाम चल रहा है, कहीं मैंचूज़ की अपनी डायनेस्टी चल रही है, उनका अपना एक पूरा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, चाइनीज़ ब्यूरोक्रेसी का. मतलब बहुत मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स तारीख़ में एग्जिस्ट किए हैं. मगर इन सिस्टम्स और इस सिस्टम में जो चीज़ आप कह सकते हैं डिसिमिलर है, वो ये है कि दिस पर्टिकुलर सिस्टम, द वन वी लिव इन नाउ, is one in which the allocation of resources is done by the market. जबकि उन systems के अंदर the allocation of resources was not managed by or done by the market. Markets existed, but allocation of resources was managed in a different way. अब आप पूछेंगे कि if market was not managing the allocation of resources, what was managing the allocation of resources? So the answer to that, of course, is tribe and custom and religion and culture and so many other aspects of life were being used to manage, to say आप ये काम करें, मैं ये काम करूँगा, तुम वो काम करो, वो जालत थे जा वगैरह. ठीक है? So a lot of other kinds of systems, but it was not the market. Markets versus market society, I've already explained कि market society is when the allocation of resources is managed by the market, and market society means capitalism. Markets can exist in any kind of society. Embedded economy means, the concept means that economists have often thought of economic institutions as almost being distinct and separate from all other social, political institutions in general. But if you really think about it, every decision that you take, that the government, for instance, takes, is simultaneously an economic decision as well as a political decision as well as having social consequences. You can never have any decision that the government takes which will be purely an economic decision, although economists often like to think in this way and talk in this way. Like they will often say, well, interest rate या फर्ज करो exchange rate का जो मामला है, ये तो purely एक economic मामला है, कोई भारी सी मैथ्स करेंगे और उसके बाद कहेंगे देखें ये सही आंसर है, बस इसको accept कर लें और ये policy अपना लें. What is being ignored in that is that actually is itself a very much a social and a political question. For example, अगर आप डॉलर के ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है आजकल, होती रहती है. क्यों डिबेट हो रही? क्योंकि एक पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर शहबाज शरीफ के तहत थे, उनका नाम था मिफ्ता इस्माइल, जो आजकल मैं कहता हूँ कि इंटरनेट पे बड़े मकबूल हैं. तो मिफ्ता इस्माइल का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि लेट द मार्केट डिटरमिन द डॉलर रेट, और अभी भी यही है. हमने डॉलर रेट को नहीं छेड़ना, हमने उसको नहीं हाथ लगाना, वो ओपन मार्केट इकोनॉमी में चलेगा, ऊपर जाए तो ऊपर जाए, नीचे जाए तो नीचे जाए, वी आर नॉट गोइंग टू टच इट. ठीक है? उसके बाद उससे हुआ क्या उनके पीरियड के अंदर कि डॉलर चढ़ना शुरू हो. जैसे ही पीडीएम वाले आए, उससे पहले भी चढ़ रहा था, आपको पता है इमरान खान के पीरियड के अंदर भी डॉलर चढ़ रहा था और पीडीएम के पीरियड के अंदर भी डॉलर चढ़ा था और चढ़ी जा रहा था और चढ़ी जा रहा था. अब डॉलर के चढ़ने से क्या होता है? डॉलर के चढ़ने से आप कहते हैं डॉलर चढ़ गया, सो व्हाट, मैंने तो डॉलर में कुछ नहीं खरीदना. मगर मामला ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह से बनी हुई है कि एक दो बहुत ही अहम चीज़ें हमें डॉलर में ही खरीदनी है.
मिसाल के तौर पे ऑयल गैस वगैरह रिलेटेड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, पेट्रोल डीजल ये वो सब कुछ हमें, गैस भी, वो सब कुछ हमें डॉलर्स में ही परचेस करना है। क्योंकि जब आप अरब्स के पास जाएंगे या आप किसी और के पास जाएंगे, आप इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जाएंगे और आप कहेंगे मुझे इतने बैरल्स ऑफ ऑयल चाहिए, तो भाई कोई भी आपको बैरल्स ऑफ ऑयल रुपए की एवज नहीं देगा, आपको उनको डॉलर्स देने पड़ेंगे। वो कहेंगे रुपयों से मैं क्या करूं, ये तो मेरे लिए रद्दी है, मुझे डॉलर दो। तो उन डॉलर्स को कमाने के लिए फिर आपको ही जाना पड़ता है। आप फर्ज करो कि डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। जब डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली वो ऑयल वगैरह जो है आप पाकिस्तान के लिए महंगा हो जाता है। एंड ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स constitute about 25% of Pakistan's imports. So when that becomes expensive, and it can become expensive because the dollar has gone up, it can also become expensive because oil has gone up, because there's a war in Ukraine, there's an oil shortage, so oil becomes expensive. When that becomes expensive, what happens inside Pakistan? Well, 65% of your bijli is produced by diesel and other oil related products. So the IPPs burn oil to create electricity. So that means electricity becomes expensive, transport also becomes expensive. Now these are two of the most important sectors of the economy. जब बिजली महंगी होगी और ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा तो सारी कीमतें महंगी होगी। अगर फ़र्ज़ करें मैं गाड़ी बना रहा हूँ या मैं जूते बना रहा हूँ या मैं तरखान हूँ, जो मर्ज़ी में हूँ, चीज़ को मार्केट तक पहुँचाना भी महंगा हो गया है, ख़ाम माल लेना भी महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्ट जो हर जगह महंगा हो गया, और जितनी देर मैंने बत्तियाँ ऑन की हुई हैं वो सारा कुछ महंगा हो गया। और बिजली कोई अब सस्ती तो नहीं रही पाकिस्तान के अंदर, महंगी। सो इस तरह यू अंडरस्टैंड कि व्हेन द प्राइस ऑफ डॉलर्स गोज अप एंड डाउन, उससे पाकिस्तान के अंदर भी इन्फ्लेशन होनी शुरू हो जाती है। अगर डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन होती है। जब इन्फ्लेशन होती है तो शायद मुझे तो इतना असर नहीं पड़ता होगा, आपको भी शायद इतना असर ना पड़ता हो, मगर जो बंदा ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन पे बैठा हुआ है, उससे थोड़ा सा ऊपर है, वो तो फड़क जाता है। जब 30% इन्फ्लेशन होती है तो दैट पर्सन स्लिप्स बिलो, एंड दोज आर मिलियंस ऑफ पीपल, दे स्लिप बिलो द पॉवर्टी लाइन। सडनली दे कैन नॉट फीड देयर चिल्ड्रन, चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं, पीपल स्टार्ट कमिंग आउट इन द स्ट्रीट्स एंड बेगिंग, पीपल गेट सिक बिकॉज दे नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन, दे स्टार्ट वर्किंग 2 to 3 जॉब्स टू ट्राई एंड मेक एंड्स मीट, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, मोर डेथ्स, ब्ला ब्ला ब्ला। इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन, राइट? सो गवर्नमेंट सेड कि नहीं, ये पॉलिसी जो है ये इससे बड़ा हमें डैमेज हो रहा है। डैमेज किस तरह हो रहा है कि अगली इलेक्शन में फिर हमें कोई वोट नहीं देगा, फिर इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा। सो दे ब्रॉट इसहाक डार कि किसी तरह इस डॉलर को मैनेज करो। तो इसहाक डार ने क्या किया कि अपने स्टेट बैंक के पास जो डॉलर रिजर्व्स थे उनको यूज़ करके डॉलर को सप्रेस किया। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि ओपन मार्केट इकोनॉमी के अंदर उसने डॉलर बेचने शुरू कर दिए। जो स्टेट बैंक के पास डॉलर रिजर्व्स थे वो बेचने शुरू कर दिए, उसने रुपए खरीदने शुरू कर दिए, डॉलर बेचने शुरू कर दिए। जब डॉलर की सप्लाई बढ़ गई तो उससे, जब आप जानते ही हैं कि जब सप्लाई बढ़ जाती है तो कीमत जो है वो अक्सर ड्रॉप हो जाती है, तो उससे कीमत ड्रॉप हो गई। तो इस तरह से उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है? तो ये अब इससे आपको नज़र क्या आता है कि इट्स नॉट प्योरली और ओनली a question of economics. It has social ramifications. People go into poverty. Inflation हो जाती है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, इलेक्शंस पे रिजल्ट आ जाता है। कोई भी मुआशी फैसला लिहाजा महज मुआशी कभी भी नहीं हो सकता, उसका हमेशा कोई ना कोई उसकी political repercussions लाजमी होंगी, and politicians have to look at those political repercussions. But neoliberal economists then say कि oh, you are dirty politicians, why do you look at the political repercussions? Just do what the economic theory tells you and everything will be fine. But that's not possible. This all we learned from Carol Polanyi. So finally he talks, that's what he means by embedded economy. Okay, every economic decision has political ramifications. Every political decision also will have economic ramifications in much the same way as I have explained just now. If you decide to go to war, it's a political decision. Does it have an economic impact? Of course it does. Huge impact, right? You decide to have a certain kind of foreign policy, that means that you may end up having more trade with your neighbors or less trade with your neighbors depending on your foreign policy. अगर आप ये कहें कि हमने जिहाद करना है और हमने इस्लाम फैलाना है, तो हो सकता है कि आपके साथ दूसरे स्टेट्स जो हैं वो अच्छे ताल्लुकात ना रखना चाहें, तो उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे तो होगा। कोई भी एक फैसला दूसरी चीज़ों को मुतासर करता है। That's what he means by an embedded economy. The 4 pillars of the 19th century civilization were, जैसे मैंने बताया था कि self-regulating market, liberal state, the gold standard and the balance of power between the states. All of that came to, वो सारा जो है ना तबाह हो गया, टूट गया World War I के अंदर। सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट भी एक बेसिक मिथ है। देखो वो एक हाइपोथेटिकल मॉडल
ग्राफ पे बना के, बोर्ड पे बना के आपको बता रहे हैं कि ये इस तरह मार्केट सेल्फ रेगुलेट होती है। मगर कभी गौर करें, और वो भी उसको डिनाई नहीं करते, कि उस मॉडल के पीछे कितनी इम्प्लीकेशंस हैं, कितनी उसकी कंडीशंस हैं कि ये तभी होगा जब एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच वाई सारी चीज़ें होंगी, तो फिर ये होगा। अब वो रियल लाइफ में कभी ए बी सी डी ई एक्स जी एक्स वाई जेड अलिफ बे पे होती ही नहीं है। ठीक है, वो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं। जब वो आपको पढ़ाते हैं तो उस वक्त आपको कहते हैं कि हाँ हमें पता है कि अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, मगर जस्ट गो विद इट टू अंडरस्टैंड द मॉडल। तो आप यू गो विद इट टू अंडरस्टैंड द मॉडल, बट यू नेवर गेट बैक टू द पॉइंट where you see कि इन रियलिटी वो अजम्पशंस जो हैं सोसाइटी में ऐसे ना तो सोसाइटी बनी हुई है और ना ही कभी ऐसे सोसाइटी बन सकती है। मिसाल के तौर पे परफेक्ट कंपटीशन की एक अजम्पशन है परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कि आपको भी पता है कि वो कितने का बना रहा है, वो कितने का बेच रहा है, वो कितने का बेच रहा है, वो कितने का बना रहा है। तो ऐसे तो कभी होता ही नहीं है, कोई भी आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता और करना चाहता भी नहीं है। अब फिर दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि परफेक्ट कंपटीशन के मॉडल में अजम्पशन ये है कि जो सबसे बड़ी अजम्पशन है दैट देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट। अब ये तो सबसे अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, क्योंकि अगर आपने किसी नई बिजनेस में घुसना है, किसी भी नई फील्ड में घुसना है, आपको अच्छी तरह पता होगा कि उसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। अगर आपने अपना करियर ही चेंज करना है तो आपको पता होगा कि शायद आपको नई डिग्री लेनी पड़ जाए, शायद आपको कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ जाए, आप CV देंगे, कोई आपको लिफ्ट ही नहीं कराएगा वगैरह। ठीक है, तो अगर इतनी छोटी सी चीज़ में कि जहाँ आपने अपना करियर चेंज करना है उसमें इतने बड़े बड़े बैरियर्स टू एंट्री हैं, तो अगर आपने पूरी अपनी कैपिटल शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें कितने कितने बड़े बैरियर्स होंगे। फिर दूसरी बात, मैंने अगर एक बिजनेस लगाई हुई है, बैरियर्स टू एग्जिट भी होते हैं। मैंने अगर एक बिजनेस लगाई हुई और वो बिजनेस 1-2 साल के लिए ठीक नहीं चल रही, तो मैं बंद करके चला जाऊंगा? पागल हो गए हो भाई, मेरा खून पसीना उस बिजनेस में गया हुआ है, जद्दी पुश्ती उस बिजनेस में लगी होगी, हो सकता है 1-2 साल अगर वो ठीक नहीं करी होगी तो मैं लॉस उठाऊंगा, मैं उसको बंद नहीं करूंगा। शायद मैं 5-6 साल भी लॉस उठाता रहूं, उसको बंद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको बंद करना इतना आसान काम नहीं है। अगर उसको बंद कर दिया तो दोबारा वो रिवाइव नहीं हो सकती। तो इसलिए देयर आर कॉस्ट्स टू बी पेड एवरी टाइम यू एग्जिट फ्रॉम अ बिजनेस or you enter into a business. Every time there are huge costs to pay, which means capital cannot flow so easily across businesses as is made out by neoclassical economics or neoliberal theory. So which means that perfect competition actually does not exist. What exists are very, very imperfect markets that are all producing at the same time for the same market, lots and lots of producers, और दे डोंट नो कि अब आप बाटा हैं, आप सर्विस हैं, ठीक है, आप नाइकी हैं और आप एडिडास हैं, ठीक है, आप सब एक दूसरे से compete करें, एक ही मार्केट है, बाकी सारे वो पीछे जो बैठे हैं, ठीक है। अब आपको बाटा वाले नहीं बताएंगे, आपको सर्विस वाले नहीं बताएंगे, और आपको नाइकी वाले और आपको एडिडास वाले नहीं बताएंगे कि मैं इस वक्त कितने जूते प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कितनी मिकदार में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये तो बिजनेस प्लान है ना आपका, ये बिजनेस प्लान तो नहीं आपने बताना कौन से जूते प्रोड्यूस कर रहा हूँ, किस कलर के होंगे, ये तो मैं सारी चीज़ें छुपा के रखूँगा। अब मैं मार्केट में प्रोड्यूस करूँगा, आपने 1 लाख शू प्रोड्यूस किया, आपने 50,000 किया, आपने 20,000 किया, आपने 2 लाख शू प्रोड्यूस किया। हो सकता है मार्केट में कैपेसिटी अब्जॉर्ब करने की जो है वो 50,000 भी ना हो शूज़ की। सारों ने इतने सारे जूते प्रोड्यूस कर दिए, अब मार्केट में वो बिक नहीं रहे, इसको एक्सेस कैपेसिटी कहेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट रिकवर कर रही है, मगर आपका ये ख्याल है कि अभी तो जूते को खरीद ही नहीं रहा, आपने वर्कर्स फायर कर दिया, आपने कहा चलो चलो अभी टाइम नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो सकती, अभी कोई खरीद नहीं रहा। जिस तरह आजकल ऑटोमोबाइल्स में, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल्स में यही है कि अभी ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियाँ बंद हैं, ये घर चले जाओ, जुमे को काम नहीं होगा वगैरह, ठीक है। अब फर्ज करो कि कल को ऑटोमोबाइल रिकवर कर जाती, अब दोबारा से प्रोडक्शन जो है फौरी तौर पे रिकवर शायद हो, शायद ना भी हो, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको दोबारा वर्कर्स ढूंढने पड़ेंगे, आपको अपनी सारी चीज़ें रीमैनेज करनी पड़ेंगी, रीऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, इंस्टेंटेनियस तो नहीं होगा। सो इसमें अप्स एंड डाउन्स हर वक्त होते रहते हैं। फिर अगर मैं इसमें और मिक्स में एक और चीज़ ऐड कर दूं कि अगर हर वक्त टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हो हफ्सा, तो उसकी वजह से और कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, मेरे पास अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाए जूते बनाने की, तो अब पहले अगर मैं 5,000 मजदूरों से जूते बनाता था, तो अब 1,000 मजदूरों से मैं उससे डबल जूते बना लूँगा। तो ऑन द वन हैंड मैंने एम्प्लॉयमेंट भी कम कर दी और ऑन द अदर हैंड मैंने आउटपुट भी ज़्यादा बढ़ा दी। जब मैंने एम्प्लॉयमेंट कम की तो मैंने डिमांड कम कर दी, एग्रीगेट डिमांड कम कर दी। जब मैंने आउटपुट बढ़ा दी तो मैंने एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दी। तो वो बिल्कुल क्रिस क्रॉस आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहती है। ठीक है, ये बातें समझ आ गई। अच्छा, फिर फिक्टिशियस कमोडिटीज़, उन्हें कहा लैंड लेबर एंड कैपिटल, सॉरी लैंड लेबर और मनी जो हैं ये फिक्टिशियस कमोडिटीज़ हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। देयर इज अ डबल मूवमेंट, ऊपर से लेजे फेयर प्लान तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, नीचे से उसके खिलाफ रिबेलियन होता है। और फ्रीडम तब होगा, रियल फ्रीडम विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन नॉट व्हेन द मार्केट्स कंट्रोल सोसाइटी, बट व्हेन सोसाइटी कंट्रोल्स द मार्केट्स। ठीक है,
that was a summary of the previous lecture with some additions. Yes. Yes, sir. So when we were talking about the market society, you told us that in capitalism, the resources are allocated according to the market, right? जी. So at the end of the day, the market consists of consumers and producers. तो अगर consumers ज़्यादा demand कर रहे हैं एक चीज़, तो it means कि at the end of the day it mean that resources are being allocated according to the will of the common man. But not according to the will of the common man, the will of the consumer. Consumer और common man एक तो नहीं है. Common consumer जो है वो है जिसके पास पैसे हैं, हाँ, और common man अक्सर वो होता है जिसके पास पैसे नहीं होते. ठीक है ना. तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास $10 billion हैं तो मेरा कंजम्पशन फुटप्रिंट उतना ही बड़ा है, और आपके पास अगर $1 है तो आपका कंजम्पशन फुटप्रिंट इतना है. इसका मतलब है जब हम मार्केट में जाते हैं तो आप और मैं बराबर नहीं. आप कॉमन मैन है, मैं तो बिलियनियर हूँ, मगर बिलियनियर का वोट मार्केट में ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसका फुटप्रिंट ज़्यादा है, उसका वॉलेट ज़्यादा है. सो ये अक्सर चीज़ कन्फ्यूजन का लोग, ये शुम्पेटर ने भी इस किस्म की कन्फ्यूजन की थी जब उसने कहा मैस प्रोडक्शन इज़ फॉर द मैसेस. But not necessarily so, because the masses don't necessarily have the money to buy. So that's what we have to keep in mind, that the consumer is not the same as the common man. The consumer is the person that has money. And in capitalist societies, the money is very, very unequal. अभी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है. पहले रिपोर्ट्स आती रही कि वो कह रहे थे कि 6 लोगों के पास दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी से ज़्यादा दौलत है. 3.5 बिलियन लोगों से ज़्यादा दौलत सिर्फ 6 लोगों के पास है. ठीक है. अभी नई उन्होंने जो रिलीज़ की, उन्होंने कहा द नंबर ऑफ बिलियनर्स इन द वर्ल्ड नीड टू बी रिड्यूस्ड. ये ऑक्सफैम कह रहा है, कोई मतलब रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऑक्सफैम. ऑक्सफैम इज़ वेरी हाईली रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन. तो वो भी कह रहे हैं कि ये बहुत अनइक्वल हो गई दुनिया, राइट. सो दैट टेल्स यू दोज 6 पीपल, इफ यू लुक एट द कंजम्पशन मार्केट, दोज 6 पीपल एज कंज्यूमर्स आर इक्वल टू द अदर 3.5 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड. एक तरफ 3.5 बिलियन, एक तरफ 6. मार्केट में they are the same, because they have the same amount of money at their disposal. So you see my point? I wanted to ask a question. At the beginning, you sort of said that the difference between markets and capitalism, and then you said what it was, but then you said capitalism is about the allocation of labor, right? Would you say that's... The market allocates. Market allocation of labor. Would you say that's the definition? Like I just... Yes, that's the write down a definition. Very good. Please write that definition down. When labor becomes a commodity and the market allocates labor power. Labor और labor power में फ़र्क क्या है? Labor power is considered a commodity. Labor is just considered the process of work. Work is not necessarily a commodity. Right now you're working. Is it a commodity? No. But if I pay you to do this work, now your labor becomes labor power. It becomes a commodity. Okay? So capitalism is when labor becomes a commodity, i.e. labor power, and labor power is allocated by the market. So I wanted to ask that Polanyi, he's a socialist, right? But would he then be, like, considering his views, would he then, very anti-neoliberal views, would he then be in favor of Keynesian economics or social welfare states then? Yes, absolutely. Okay. Yeah, absolutely. And I want to ask, there are models that the economists have made based on real fact, in the sense that they made this model that, economic liberalism will always be better than socialism, based on what the Berlin Wall, the Berlin Wall experiment that they did was that, one half of the Berlin Wall is socialist, the other is, more capitalist, and, one half did better than the other. So that's how they use as a model to justify economic liberalism. It's what I studied in principles of microeconomics. So they have done these kind of simplified models of... Yeah, and the problem with those models, of course, is that they're deeply simplified. So, for example, the economic recovery, let's say, of the Federal Republic of Germany versus what happened in East Germany, you have to look at many, many different factors, the Marshall Plan, European recovery, because America gave huge amounts of aid and assistance. In fact, even the Soviet Union applied for that assistance. They said, "Hame bhi do," because World War II has destroyed all the infrastructure here. So while Europe got massive assistance from the Americans, Soviet Union had to rebuild from scratch. All the destruction was in the Soviet Union, where 26 million people had died. All the industry was destroyed and devastated. The farms were burnt up, etc. Millions of people killed. Male labor ki shortage thi. The ratio of men to female was something like there was 1.5 or maybe 2 females to every 1 guy, because all the men had died.
So we're talking about apples, completely talking about apples and oranges here. So in these sorts of simplistic sort of ways, they often do these comparisons. A better comparison would be the same society adopting two different social systems. Two different societies adopting two different social systems has too many other variables that are not the same. But the same society adopting two different social systems would be a closer approximation. And the best idea I can give you for that is, of course, the former Soviet Union and Russia. Russia's same country, was socialist, superpower, became capitalist, and accepted shock therapy of IMF, completely got devastated and destroyed. There's a counterexample. Simple as that. Yes. Sir, wouldn't you say that embedded economy ka jo idea, you can also think of it as the exchange value of something taking over everything else? Or is that more the market society thing? Yeah, I mean, you can think of it in that way, and that's the same as saying that the market determines allocation of resources. But I think the context in which Polanyi wants to talk about it is a little broader in the sense that when we talk about economics, in the economics department, I used to teach economics myself, as I've told you. When we talk about economics, we have to look at economic relations as being part of overall social relations, not separate from other social relations. So we have to recognize that the economy is always embedded in all social relations. You can't separate economic relations from everything else. You can't have a horrible economic system in which poor people are ground to dust and then say, oh, jamhuriyat bhi ho jayegi. Kaise ho sakta hai? You see? So you have to, when you examine these things, you have to look at these things a little more holistically. He's not against abstraction. It's not against saying that we don't look at things from one dimension, but what he's trying to say is that you look at it from one aspect, but just remember one aspect is not enough. You have to look at something from all the different aspects. Yes. Go the last part once again. What is freedom? So freedom for him is simply that the market is allocating resources in society, and he thinks that the market is wildly fluctuating, very, very difficult, very chaotic, very anarchic, very unmanageable actually. Unlike what the neoclassical economists say, I mean, वो तो ऐसे उसके बारे में बात करते हैं market के बारे में, जैसे it's like a Ferrari engine or something. It's so finely tuned. You just करूँगा तो यूँ गाड़ी उड़ जाएगी, यूँ शीं करूँगा तो यूँ गाड़ी. It's not like that. The market is actually very chaotic, very, very anarchic, very, very volatile. पूरी कंट्रीज जो हैं वो स्पेकुलेशन के नाम पे, करेंसीज पूरी स्पेकुलेशन की वजह से तबाह हो जाती हैं. हाउ इज दैट सेल्फ करेक्टिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग? यू सी व्हाट आई एम सेइंग? नाउ the actual evidence from society that we see is that markets are extremely unpredictable. They are actually very unpredictable. All these really amazing young friends of mine who were some of the brightest people went into investment banking and so on. Okay? Some of the smartest kids in my class went into investment banking. They're all doing really, really well. Okay? And they try to, what are they trying to do? They're trying to predict the market. And is it really predictable in any mathematical way? Totally unpredictable. Totally. जितनी मर्जी मैथ लगा लो, मार्केट नहीं प्रिडिक्ट हो सकती. बहुत मुश्किल काम है. एक छोटी सी आपको एग्जांपल और देता हूँ, which is a great thing that, because Amina raised this point, she may appreciate it as well. In the Soviet Union, they tried the same thing. They said prices को छोड़ दो, और फिर mathematical formula से हम price को जो है वो करेंगे, predict करेंगे. उससे हमें market signal. They try to combine price signals with planned economy in this particular interesting way. And they had the best mathematicians because the Russians are quite amazing at math. And you know the conclusion they came to, put in their own sort of really, tough vocabulary, stochastics and so on, and yevo. They said basically it can't be done because it's too unpredictable. Math cannot, no matter how much advanced math you use, it cannot predict what's going to happen in the stock market. आपने खुद ही देख लिया होगा, कोई बंदा आज तक predict नहीं कर सका. There's so many interesting videos. For example, you can find वॉरेन बफेट का वीडियो है. वो कहता है कि ये देखो आप सारे जो है ना यूं ऊपर नीचे इन्वेस्ट कर रहे होते हो. मैंने तो कभी इस तरह इन्वेस्ट नहीं किया. मैं तो एक एसेट लेता हूँ और फिर 30 साल मैं उसको चेंज नहीं करता हूँ, और 30 साल बाद जो एवरेज रेट मार्केट का होता है वो मुझे मिल जाता है. एंड एक्चुअली आई एंड अप अर्निंग बेटर देन ऑल द लिटिल स्टॉक ब्रोकर्स हु आर कॉन्स्टेंटली फिडलिंग अराउंड एंड बाइंग एंड सेलिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग. एंड ही हैज द डेटा टू प्रूव इट. Because it's very unpredictable. Again, simple सी बात है. कोई छोटी सी चीज़ हो जाए, एप्पल के अंदर पता चला जी वायरस, एप्पल जो है ना is very vulnerable to one particular virus that doesn't impact Huawei and I don't know Samsung and everything. तड़ल करके एप्पल की मार्केट क्रैश कर जाएगी. ऐसे
मिनटों से। ऐसे ही होता है ना मार्केट के अंदर। अब कौन प्रेडिक्ट कर सकता है कि वो वायरस कब आया, किसने बनाया, कैसे हुआ? Nobody can do it. So रियलिटी ये है, अगर आप इकोनॉमिक थियरी को छोड़ें, क्योंकि वो बहुत सारी अजम्पशंस पर कायम है, और वो अजम्पशंस हैं जो कि रियल वर्ल्ड में ट्रू है ही नहीं। तो जैसे आप इस चीज़ को रियलाइज कर लेते हैं कि भाई ये तो है ही, इस तरह है ही नहीं दुनिया, ये तो एक ह्यूरिस्टिक मॉडल था, तो फिर आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि फिर चलो ओके देन लेट्स सी व्हाट इज द मार्केट एक्चुअली बिहेव लाइक। देन यू फाइंड आउट दैट द मार्केट इज वाइल्डली अनप्रेडिक्टेबल, very, very difficult, very, very volatile. Keynes also basically pretty much said the same thing. So, did I answer your question? Was that? Yes. Okay. Yes.